Hi everyone. Thank you so much for joining. My name is Salah Pirzada. I'm a lecturer in material science at the University of Oxford. I'm sorry I'm outside, so you might hear some disturbances on the background. So this is the fifth workshop on between Oxford Pakistan Programme and Project EduAccess to help students with the application process. This workshop's mainly focused on master students and their application. So yeah, this is the fifth series of our workshop. Oxford Pakistan Programme is a platform that started 3 years ago. We have been working on providing students in Pakistan with application support as well as scholarships. This year we were able to provide 10 scholarships for graduate students studying at University of Oxford, and Jaber is one of the OPP scholars this year. And I'll hand it over to Jaber to go through the presentation that we prepared for you. Thank you. Okay, thank you, Dr. Tara. And first of all, I want to share my experience with Oxford Pakistan Programme. So Oxford Pakistan Programme is a dream for those students who belongs to underprivileged background, और ऐसे लोग के जिन लोगों को बस ये सोच सकते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, और वो लोग यही सोच के ही अपनी एजुकेशन का कैरियर या ज़्यादा बड़ा सोचना या ऑक्सफोर्ड को सोचना या कैम्ब्रिज को सोचना वहीं पे स्टॉप कर देते हैं कि उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में तो बहुत से हर्डल्स हैं। तो उन हर्डल्स को दूर करने के लिए, उन लोगों को आगे ले आने के लिए ये इनिशिएटिव ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम ने लिया, और उनकी एक मिसाल उनमें से मैं हूँ। तो starting from the presentation, this workshop, as Dr. Tara told you, basically based on the master students, we are going to tell you here, okay, how to make your documents and how to prepare, how to apply for the British universities and especially Oxford or Cambridge. And our outline of the presentation is given here about the workshop. Meet your panelists, and about the workshop, we have put together 10 parts workshop series for the mentees on the Pakistan Graduate Mentorship Programme 2023 and 2024. These workshops will cover the different aspects of university and the scholarship application, CV writing, SoP drafting, and are the means to supplement the mentorship you receive. Today workshop 5 of the 10 will build on the introductory workshop to delve deeper into master's applications. Mentees will have the opportunity to ask questions and receive personalized guidance in discipline-based breakout rooms. So meet your panelists. First one, Ali Dawood Al-Rahman, the MPhil Modern South Asian Studies, University of Cambridge. Shanze Mahmood, Masters in Business Administration, MBA, University of Oxford. Amna Beg, Masters of Public Policy, University of Oxford. And me, Jaber Ali, DPhil in Chemical Biology from University of Oxford. And Bilal Mustafa, PGDIP in International Wildlife Conservation Practices from University of Oxford, and the great Dr. Talha, a postdoctoral fellow at the University of Oxford. So, how to find a course you are interested in? First step, identify the university you wish to apply. And the second step, check the graduate study website or the postgraduate admission website. And the third step, find out from the list of the courses you best suit your interest for higher studies. Check if you are eligible to pursue the course of interest. Check if you have funding options available. Throughout the process, talk to us or other mentors, seniors, advisors you may have. So to
पहले स्टेप में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आइडेंटिफाई द यूनिवर्सिटी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव देखना होता है कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, आपने किस कोर्स में अप्लाई करना है, और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके कोर्स के लिए बेस्ट सूट करती है, और उस यूनिवर्सिटी में कौन सी ऐसी लैब है या कौन सा ऐसा प्रोफेसर है जो आपकी रिसर्च डोमेन में काम कर रहा है। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग दीज थिंग्स, फिर आपने अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल देखने होते हैं। उसके बाद उनको सब चीज़ों को मैच करने के बाद जब आपको लगता है कि हम एलिजिबल हैं एट एवरी पॉइंट, तो देन आपने फंडिंग ऑप्शन देखने होते हैं कि कौन कौन से फंडिंग ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद एप्लीकेशन एलिमेंट्स। तो एप्लीकेशन एलिमेंट्स में सबसे अहम जो एप्लीकेशन का, किसी भी एप्लीकेशन का इंटीग्रल पार्ट होता है, या जिस पे आपकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा मोस्टली डिपेंड कर रही होती है, एज इन माय एक्सपीरियंस, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो आपकी एप्लीकेशन में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे आपने वो रीजंस, आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपने सब बयान करना होता है। स्टडी एंड रिसर्च इंटरेस्ट, कि आपने क्या ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, एंड what is your current interest, and in which research domain you want to apply, or what are your career plans, and other relevant aspects of your background. So in SOP, आपने मीन्स आपने बैठ के सबसे पहले तो आपने ये सोचना होता है कि आप सोचें, प्लान करें कि आप SOP के कौन कौन से 4 से 5 मेन एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को या उन इंग्रेडिएंट्स को राइट डाउन करने के बाद वन बाय वन उस एक एलिमेंट के बारे में सोचें। कि सपोज दैट, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो साइंस बैकग्राउंड का है, लाइक मी, मैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे यहाँ पे काम करता हूँ। तो वाइल आई वाज राइटिंग माय SOP, तो मैंने अपने SOP को, अपने इंटरेस्ट को ऐसे बयान किया, सपोज दैट कि बैक्टीरिया जो है, वो बैक्टीरिया मेरा टॉपिक ऑफ इंटेंशन रहा मेरे हायर सेकेंडरी क्लासेस से, कि जब से मैंने बैक्टीरिया एज अ साइंस में बैक्टीरिया का नाम पहली दफ़ा सुना, तो फिर मैंने ये सोचा कि ये इतना छोटा ऑर्गेनिज्म कैसे इतनी बड़ी डिजीज़ कर लेता है और फिर डेथ काज कर देता है। तो वहाँ से एक आपने एक स्टोरी लिंक करनी होती है अपनी प्रीवियस लाइफ की, अपनी प्रीवियस एजुकेशन की, और उसको मूव ऑन करवाना होता है अपने करंट इंटरेस्ट और अपने फ्यूचर इंटरेस्ट, और जिस लैब में या जिस PhD प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे होते हैं उसके साथ। और इन सब चीज़ों को सपोर्ट देनी होती है अपनी स्किल्स के साथ, अपनी पब्लिकेशंस के साथ, अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। So moving on to curriculum vitae CV, summary of your educational qualifications and experiences and skills. Educational qualifications means your degrees, in which course you completed, your masters, your bachelors. In case of master program you are applying, so in which course you have completed your Bachelor of Science. And you should have to mention your CGPA if you have a good one, and your percentage if you have some distinctions, or you got any medal or any sort of other thing. And experiences means, in this case, you should have to mention your research experiences. Either you have an internship, either you have any other research experiences, like you have done any research project in any collaboration with your bachelor supervisor, or any report writing sort of experiences. So skills, in skills you can put the tools you have applied during your bachelor education. Especially you can add the softwares, the digital skills that are related to your course that you are going to apply, or the lab you have chosen for your master studies. Like you can also add some other skills like programming skills, like some language skills, and the skills related to your degrees as well. So writing sample essay demonstrating your research skills, scholarship essays, and academic qualification documents, official degree transcript, and TOEFL, IELTS scores,
for English language competency. So in some cases here in UK, you can get the waiver from IELTS, but in some cases you can't. It's depend upon your program, your university, your supervisor, or your master's degree program. So you should carefully check the all requirements in your program, and then you have to decide whether you have to go for IELTS offer or not. So letter of recommendation, references from the professor, mentor, or supervisor. So you should have to manage 2 or 3 reference letters from your previous supervisors or your teachers or your mentors. Preferably it should be academic supervisor. In other cases, you can also use some industry, or if you have any job experience, you can get any letter from your mentor or some sort of other type of supervisors where you are working. And the content of reference letter should depend upon your programs. Most of the programs and the universities have the draft or the program websites has mentioned the requirement for the recommendation letter. You should have to visit that website and read carefully and make sure everything is mentioned in your document. So any question you can ask. This is from me. Thank you so much. Thank you so much, Jabir. Just a few things. When you're thinking about your master's application, one thing you have to think about is your interest outside that subject. So when you're applying for a master's degree, it's a very specialist degree. So for example, if you're applying for mechanical engineering, if you're applying for, let's say, a master's in public policy, it's more specific. So it needs to link to your work experience as well. We've done workshops on CVs and we've done workshops on other things already. But this is an overall workshop for you guys to have a more question and answer session to ask us what exactly you're applying for, and ask specific questions which would be really, really helpful for your particular application. So yeah, please, the floor is yours. If anyone has any questions, there's six of us panelists over here. We'll be more than happy to answer your questions. Statement of purpose, ingredients, please. So I'll give you an idea about the engineering or science statement of purpose, and then I'll ask Shanze or Amna to talk about the other ones as well. So in terms of when you think about the statement of purpose, it really needs to show कि किस तरह आपका relevant experience है. For example, अगर मैं एरोस्पेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आई रियली नीड टू शो कि मेरा उस चीज में क्या इंटरेस्ट है और कैसे, what are the main reasons why I am applying for that. The second thing is you have to look at the modules that would be present in that particular masters, and you need to tailor your application accordingly, and make sure you mention some of those courses in that master's program. So over to you, Amna or Shanze, if you want to add to the social science or MBA side of things. Sure, I can just add quickly. I've done both, so both in terms of a social science master's and on the business side. I think if that's your area, then particular engagement with specific issues that you either care about or have worked on, जिसमें policy issues हैं या social issues हैं, development issues हैं, आपके ये क्या thoughts है around it, आप क्या काम कर रहे हैं उसमें, and what are your views, how do you want to use this further education to be able to engage in some of those issues, if that's part of your career journey, or if it's something that you're looking to pivot into. So I would give a general suggestion around reading around those issue areas and referencing different things that you have read or engaged with, as well as I think the other useful point that Tala mentioned around how are those specific elements of the program that you researched, modules, activities, professors, projects, tie into those issue areas. Amna, is there anything you want to add from your experience with public policy? Yes, can you guys hear me? Yeah.
Absolutely. I just built on what Shanza said. With public policy at Oxford, it's a mid-career program. One of the things that you need to understand before applying for that school is that you need to have at least some sort of experience in public policy before you decide to apply. The more the experience, the better it is, but it doesn't mean that even if you have 1 year's experience or 2 years experience, you can't apply. You can, and you can also get in. With the Oxford statement of purpose, I mean, Oxford की statement of purpose बहुत लंबी नहीं है. Generally US schools में कुछ schools हैं जिनकी आप apply करते हो तो काफी लंबी personal statement होती है. But with the Blavatnik School of Government, आपकी एक I think 800 words की या 1000 words की personal statement होती है. So you can't go on and on about what you have done, what your thoughts are. You have to be extremely specific, right? So you need to build on, you need to start off like the first paragraph is extremely important. You need to get their attention. The person reading your personal statement should be interested in you after reading your personal first paragraph to go on to the next one. So I'll give you an example from what I wrote in my personal statement was कि मैंने अपने introductory paragraph में ही exactly लिख दिया था that I am from the police service, and police service in Pakistan has very few female police officers, right? So that's an interesting fact that I wrote. And uske baad I built on that कि मैं किस तरह से as a police officer, female police officer, I'm contributing to the gender space in Pakistan. So आपने जो अपना पहला पैराग्राफ है उसको बहुत ही ज़्यादा concise और interesting बनाना है, और उसमें आपके बारे में जो special चीज़ है, जो एक special काम आपने किया है, या जो एक I'd say interesting fact है, उसको वहाँ पे ही आपने लिख देना है ताकि उससे आगे interest build हो आपकी personal statement में. उसके बाद जो at least Masters of Public Policy की personal statement है, you need to not talk about generic things. You need to identify a problem and you need to write a solution for it, right? Like how you are looking at a solution in terms of public policy for that particular problem. So for example, अगर मैं आपको अपनी example दूं, so I wrote that I think that there is an epidemic of gender-based violence in Pakistan, and as a police officer, I've seen that, and access to justice बहुत limited है औरतों के लिए. तो एक एरिया लेके आपने उसी को स्पेसिफाई करके कहना है कि मैं इसी में काम करना चाहती हूँ और मैं इसी को बेहतर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, राइट? सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट 10 थिंग्स, जैसे जाबिर ने कहा कि ही टॉक्ड अबाउट बैक्टीरिया, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं बैक्टीरिया वायरस सबका जस्ट आइडेंटिफाई 1 और मैक्सिमम 2 एरियाज. 1 वुड बी परफेक्ट, एंड देन उसी की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उसी का पॉलिसी सोल्यूशन आप बताएं कि आप किस तरह से, या आपने उसकी तरफ काम किया या आपने सोचा कि आप उसकी तरफ काम करेंगे, और उसी सोच को आगे ले जाने के लिए ये डिग्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगेन, you need to exactly tell them why you're applying to this specific program, right? So there could be hundreds of Masters of Public Policy program, but why are you specifically interested in the Oxford one, or why are you interested in the Oxford MBA? is कि वो किस तरह से उनका प्रोग्राम डिफरेंट है, और जो चीज आप चाह रहे हो अपने मास्टर्स के प्रोग्राम में वो आपको ऑक्सफोर्ड के ही प्रोग्राम में नजर आ रही है, राइट? तो उसमें थोड़ी सी रिसर्च करना जरूरी होती है. यू हैव टू गो बैक टू द वेबसाइट वेयर द होल प्रोग्राम इज एक्सप्लेन्ड, ताकि आपको पता चले कि उस प्रोग्राम में वो एग्जैक्टली ऑफर क्या करें. सो आपने अपने आखिरी पैराग्राफ में, अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखना है कि जो आपके प्रोग्राम में निगोशिएशन का कोर्स आप लोग ऑफर कर रहे हैं, या आप लोग ऑफर कर रहे हैं समथिंग रिलेटेड टू I'd say evidence in policy या law and policy, तो आपने लिखना है कि जो मैंने ऊपर बात की है उसमें मुझे ये वाले कोर्सेज जो हैं वो लगता है कि मुझे हेल्प करेंगे to become a better public servant or a public policy maker later on. And बेहतर होता है, अच्छा होता है अगर आप एक दो प्रोफेसर्स को सर्च कर लें, देख लें कि उनके स्कूल में एक आध कोई ऐसा प्रोफेसर है जो किसी एक आध स्पेसिफिक चीज पे रिसर्च कराए. जैसे फॉर एग्जांपल ब्लावार्टनिक में climate, health और education पे बहुत ज़्यादा research होती है. So if you're interested in one of those areas, so just look up a professor who's engaged with Blavatnik in any way, चाहे वो research है, चाहे वो पढ़ा रहा है, और कहो कि मैं उससे एक आध लाइन में लिखो कि I'd want to benefit from their research, and like probably collaborate with them in future, and like take it on from there. तो ये एक थोड़ा सा, I think I'd more stress on the structure of your personal statement in terms of how you started, how you built on it, and how you ended. Thank you so much, Amna. Any the other panelists, do you guys want to add to this? I'd like to add one thing. It's just, you need to answer the question, why you?
for example, when you are applying for arts and humanities courses, you need to mention what interests do you have, and why do you want to go to, for example, if you're applying to a history course, or if you're applying to anthropology course, why do you want to go to the UK and do that research when you can do better research here? Your archives are here, your communities that you want to work on, they are here. So you need to, so you need to answer those questions in a very concrete way. And you need to show that what you can contribute to the field. For example, if you're applying to history, you need to show that your resources are in the UK, and the kind of training that you can get in the UK is not the same that you'll get here. So those kind of answers, it should be personal statement as its title, I think, reflects. It should be as personal as it can be. Everybody is going to mention generic things. Everybody is going to mention all the courses. Everybody is going to mention superstar professors that are in the course. But you need to show in your personal statement why you are the right person for the job. Yeah. Thanks, Ali. I'm just helping out Tala with the facilitation, as he's also in a loud area. So I see there's another hand raised. Rao, would you like to go ahead and ask your question? You've been waiting patiently, so I'll give you a chance to ask. Yeah. Thank you, everyone. Thank you. Am I audible? Yes. Yeah. First of all, thank you, Dr. Jabir, for this enlightening talk. I do have actually a question, and one of the panelists mentioned that if you don't have any prior experience, you should not apply, or if that program is not worth considering, if you don't have a prior research experience. So I was wondering if I want to apply for MSc Oncology program at Oxford University, and I have background in biotechnology, and as you may expect from various or majority of Pakistani students living in Pakistan, they don't have any sort of research experience, particularly in cancer biology or oncological research in their bachelor's. So if some student is planning on applying for MSc Oncology program without any as such research experience, even though I do have a couple of courses that I have taken from Coursera and a personal motivation from my family history of cancer. So do you think I should go ahead and apply for that program, or just go on and look for some other course that is related to my bachelor's background, rather than my taste and interest that I really want to pursue? Thank you so much for that question, Rao. Just give me an idea. What was your master's, undergrad degree again? It was in biotechnology. That's fine, because आप जब masters के लिए apply कर रहे हो ना, so you're not applying for a DPhil or a PhD where you have to be very, very specific and you have to have that relevant experience. जब आप undergrad से masters में shift होते हो, तो that variation, that's not a huge variation with what you've done in your undergrad. Obviously, जब आप personal statement लिखोगे या statement of purpose लिखोगे, उसके अंदर आपने specify करना है कि आपने क्यों ये research करनी है. What is the story behind it? Which professor do you want to benefit from? Why do you want to go about it? So the why needs to be defended very well. But other than that, this won't be a problem. I'll also hand over to Jabir to comment on this, because this is his department. Jabir? Yes, Dr. Tara, you are saying right. It is not a big shuffle. You can go and आपको सबसे पहले जो मेरा आपको सजेशन है कि आप कोई ऐसा प्रोफेसर देखें उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये चीज़ बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट रखती है. और आप कोई भी सुपरवाइज़र देखें जिस एरिया में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या जो आपकी मोटिवेशन है, उसके साथ अपना एक अच्छा वेल बैलेंस्ड, जिसको कहते हैं एक रिसर्च बेस्ड सीवी, रिसर्च बेस्ड बीन, जो एक अच्छा सीवी होता है, टू रिसर्च टाइप सीवी जो होती है, वो आप उसके साथ शेयर करें. ओके, एक अच्छी ईमेल ड्राफ्ट लिखें और उनको ईमेल करें, उनको अपनी विलिंगनेस शो करवाएं और उनसे कोई पोजीशन का पूछें. अगर वो आपको एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो देन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है एडमिशन लेना.
और I think Jabir, just to add on to that, Jabir, I think Rao was talking about a master's program, na? A taught master's program. What you're implying No, to no. is more. Sorry. Let me allow to cut you off here. I am Yeah. actually talking about research, masters by research. Excellent, excellent. That's fine then. Carry on, Jabir. Sorry about that. यस थैंक यू डॉक्टर तला और आप उनको ईमेल करें और जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो देन आपका प्रोसेस जो है बहुत इजी हो जाता है और आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी मोटिवेशन आपका पास जो आप कोर्सेज कह रहे हैं कि जो कोर्सेज आपने लिए हुए हैं ऑन्कोलॉजी पे उन कोर्सेज की बेस और आपका फ्यूचर प्लान आपने क्या करना है कौन कौन सी आप टेक्निक्स यूज़ करेंगे और किस प्रोफेसर के अंडर करेंगे और ये चीज़ें इनका एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और आपने अपनी स्टेटमेंट पर्पस में वो चीज़ें अच्छे से हाईलाइट करनी है और ज़्यादा हाईलाइट करनी है कि जो चीज़ें आपके फ्यूचर प्लान को आपका प्रीवियस बैकग्राउंड में हो और आपके फ्यूचर प्लान के साथ मैच करती हैं So, are you suggesting that my statement of purpose is something that is setting me apart from the rest of the candidates who are applying for the same degree? So, I would also like to ask you that, is it mandatory for me to add sort of a research proposal attached with the email of the professor that I'm it is not compulsory in case of Oxford. I think so. You're going to apply a master degree and for PhD it's even for PhD it is not compulsory in Oxford in many departments. You should have to concentrate on, for first step, you should have to identify a professor and check his lab and read some papers and watch some research, you can say the research gaps in his papers and identify those areas and match to your interests and make some sort of good email and mention these things कि प्रोफेसर आपने इस चीज़ पे काम किया है ये पेपर आपका मैंने रीड किया है इसमें ये एरिया मतलब मिसिंग था इसका ये रिसर्च गैप है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये रिसर्च गैप आके कंटिन्यू करूँ आपकी लैब में तो दिस थिंग विल मेक इम्पैक्ट और ये वे फॉरवर्ड हो सकता है आपके लिए रेदर देन आप रिसर्च प्रपोजल बनाओ और आप ऐसा रिसर्च प्रपोजल बनाओ कि जो एरिया पे वो उस वक्त प्रोफेसर काम ही ना कर रहा हो या उस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा प्रोफेसर हो कि जो उस चीज़ पे काम ही ना करता हो तो देन वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा और इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना डिपार्टमेंट देखें अपने डिपार्टमेंट में तमाम प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स देखें और एक दो प्रोफेसर वहाँ से शॉर्ट लिस्ट करें और वो शॉर्ट लिस्ट करें जो आपके इंटरेस्ट के करीब करीब हैं और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आपकी जो कोर्सेज आपने बताए हैं वो सारी चीज़ें उसके साथ थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मैच करती हूँ और देन उसके एक दो लेटेस्ट पेपर पढ़ें 2023 के पढ़ सकते हैं 2022 के पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद वो एरियाज आइडेंटिफाई करें कि जिन एरियाज में आप काम करना चाहते हैं उनके पेपर का ईमेल में एक ड्राफ्ट बना के रेफरेंस दें आपका मैंने ये पेपर पढ़ा है और उसमें ये रिसर्च गैप था तो मैं इस एरिया पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ Perfect. Thank you very much, everyone. There's been a few questions in the chat around length of statement of purpose, asking about what's the right length, what's too short, what's too long. I think in my experience, there's typically some guidance on number of words. Sometimes they don't give that, and in which case, I think the suggestion would be don't make it too long, like maybe a page or so. But typically they will say number of pages, number of words. Anyone else on the panel have other experience on length? Yes, exactly. You're right. In case of Oxford, it should be around 700 words. And yes, on the point of professors or the recruitment team don't have a huge amount of time to spend reviewing every statement in depth. I think the points that Amna made earlier about the structure, having a grabbing first paragraph and then keeping your structure tight where there isn't guidance on number of words is one to keep in mind. Yes, exactly.
I'm trying to see. Yeah. If you allow, I just want to talk about another thing. So for example, in my application for the Masters of Public Policy, there wasn't just the statement of purpose. There was also another short essay and also one policy paper, right? So just I'm going to quickly go over that so that people know exactly what to do in those parts of the application as well. I'd say जो policy memo आपसे, for example, for Masters of Public Policy, उनकी requirement है that they'd ask you to write a policy memo with the application. So ensure कि जो आपका policy memo आप लिख रहे हो, by the way, word limit पे भी at least for public policy, जो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, चाहे वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांग रहे हैं, चाहे वो आपसे पर्सनल एसे मांग रहे हैं, या वो आपसे पॉलिसी पेपर मांग रहे हैं, उसका सब एग्जैक्ट गाइडेंस लिखी होती है. So read exactly what they're saying. So if they're saying 800 words, you have to do 800 words, right? So read the guidance. और जो public policy paper आपने लिखना है, at least for Masters of Public Policy, I just quickly point out that it needs to be in line with what you're saying in your statement of purpose, right? So agar aap apni statement of purpose mein health ki baat kar rahe ho, I know it's a very basic thing, but just to be clear, make sure that your statement your policy memo is identifying a loophole in the health sector of Pakistan or wherever you have worked and trying to come up with a solution for it. So link your policy memo to your statement of purpose. The second thing is that you're also required a small, probably like 500 word essay about something that has influenced you or something that has had an impact on you as a person, and it's more to do, it's a very generic question that they ask you, but also I would suggest that make sure that it is in line with what you're saying in your statement of purpose, right? So for example, मुझसे उन्होंने पूछा था कि what influenced you, और इस तरह का question था which was very generic. So I made sure that I write about, how Noor Muqaddam's case or whatever, some other big case that I saw in my career influenced me to think about the solutions and what condition the women of Pakistan live in terms of gender-based violence. So make sure that your complete application is in line with one theme or maximum two themes, but I'd still say one theme. And then finally, my other input would be on letters of recommendation. Extremely important, and I got to know about them because I just submitted two reference letter of recommendations, but for my program they required 3. I think Oxford generally requires 3, and Oxford, usually the universities in UK are very particular about your education, so they keep asking you to submit at least 1 or 2 letter of recommendations from your professors or somebody who has previously taught you. So make sure that you're in touch with those people, make sure that they submit it in time. And I remember I just submitted 2, and then they kept asking me to submit another, and then they specifically asked me to submit from someone who has taught me previously, right? So I had been in the civil service for 7-8 years. I was not in touch with my professors, so I went back, I asked them. तो ये सारी चीजें कंप्लीट करें. और दूसरा ये है कि अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में whoever is writing your letter of recommendation, tell them exactly what you're trying to do at Oxford, what you have written in your personal statement, so that your letters of recommendations are also going to reflect the same thing. Yes, exactly, Amna. Thanks so much. I wanted to come to a few hands. Osama, I see you have your hand up. There was a hand earlier. I believe Qasim, you had your hand up, but we didn't get to you yet. Want to give you a chance in case you still have a question you want to ask. Or if not, you can put it in the chat. Hello, everyone. Good evening. Thank you for taking my question. ये तो तकरीबन जो प्रोसेस है इसका तो हमें हुआ है. मैं खुद इस प्रोसेस पे हूँ. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो एप्लीकेशन है, मैंने ये सारा एप्लीकेशन फिल किया, लेकिन उसमें लास्ट में ये है क्योंकि सेम एप्लीकेशन आपका जो है वो इट्स फॉर एडमिशन एंड वो स्कॉलरशिप्स के लिए भी है. तो उसमें कुछ स्कॉलरशिप सेलेक्ट करने हैं. उसमें मतलब अगर उसमें कुछ गाइड करें तो उसमें किस तरह के या उसके रिक्वायरमेंट्स हमने देखने हैं, जो फंडिंग जो उस पे है, अगर इस हवाले से कुछ मतलब गाइड कर लें
कि लास्ट में जो हम एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे तो फंडिंग के हवाले से, चूँकि एक ही एप्लीकेशन आपकी फंडिंग का भी है और वही एप्लीकेशन आपके एडमिशन का भी है, तो मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो तो क्या ये हमारे जो स्कॉलरशिप के चांसेस है उसको इफ़ेक्ट करेगी? अगर इस पे हम थोड़ी बात करें। थैंक यू अगेन फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। किसी ने स्कॉलरशिप के एक्सपीरियंस के वाले बात कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या था? आई थिंक मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इनपुट दे देता हूँ। देखिए, जो ऑक्सफोर्ड की एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस है ना, वो तो आप जब अप्लाई करेंगे तो एंड में इल आस्क यू के आप अपने आप को जो जो उनसी पाकिस्तानी रिलेटेड स्कॉलरशिप्स है ना, जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, नून हो गई, सर अनवर परवेज हो गई, वाइडेनफेल्ड हो गई, इन सारों के लिए वो आप को ऑटोमेटिकली कंसिडर कर देगा। एक ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज की एप्लीकेशन स्कॉलरशिप है जिसके लिए आपको अलग से एक नोट लिखना पड़ेगा, लेकिन बाकी आप डायरेक्टली कंसिडर हो जाएंगे। और ये मैं आपको सिर्फ ऑक्सफोर्ड रिलेटेड बात कर, जी सॉरी। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऑक्सफोर्ड का भी मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस किया है, ये बिल्कुल सेम है ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। एक ही एप्लीकेशन आपके जो फिर है वो आप ऑटोमेटिकली कंसीडर होंगे, लेकिन उसमें कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं लाइक कैम्ब्रिज में, उसमें आपने स्कॉलरशिप सेलेक्ट करने हैं कि आपको मतलब कौन सा स्कॉलरशिप होना चाहिए, तो वो सेलेक्ट करके उसमें भी राइटिंग्स या मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें अगर किसी ने ये एब्सोल्युटली। अब मैं बिल्कुल कासिम साहब आपकी बात समझ गया हूँ। फिर आपने ये करना है कि जो वो स्कॉलरशिप है ना, उसकी आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर विकी नून स्कॉलरशिप देख रहे हैं तो उनका क्राइटेरिया होगा। इसी तरह अगर आप कैम्ब्रिज में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स देख रहे हैं तो उनका अपना एक, उनकी वेबसाइट पे जाके उनका क्राइटेरिया स्टडी करें कि वो किस टाइप के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ ओपीपी की बात कर दूं तो हमारा एक सेट क्राइटेरिया है कि हमें किस टाइप के कैंडिडेट्स चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन अगर कोई स्पेशल एप्लीकेशन है तो आप उस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन की वेबसाइट पे जाके सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और आप उसके हिसाब से नोट लिख सकते हैं कि जो नोट टेलर्ड हो उस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के लिए। तो आपने कोई स्कॉलरशिप देखा है कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे? जो सपोज दैट एक स्कॉलरशिप है कैम्ब्रिज केपीके फेलोशिप के नाम से, और एक स्कॉलरशिप है उसमें कैम्ब्रिज में मिलिंडा गेट फेलोशिप, आई थिंक सो, एक कॉमनवेल्थ की है। और इस तरह के एज आई वाज अप्लाइंग इन कैम्ब्रिज 1 year ago, तो उस वक्त मैंने वो राइट किए थे ऑलमोस्ट आई थिंक सो 7 or 8 स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जो कैम्ब्रिज में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें एक स्कॉलरशिप ऐसी है जिसमें वो गेट्स फेलोशिप जो है, आई थिंक सो, तो उसमें आपको अलहदा से उनका एसओपी, उनकी अलहदा एप्लीकेशन देनी होती है, और आपके रेफरेंस लेटर भी आपको अलहदा में चाहिए होते हैं वो गेट्स फेलोशिप के लिए। और उसकी डेडलाइन वहाँ कोर्स जब आप अप्लाई करते हैं तो पोर्टल पे मेंशन होती है कि गेट्स स्कॉलरशिप जो है ना, उसकी डेडलाइन ये है। और उसके अलावा एक कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप है, और एक एचईसी और कैम्ब्रिज का एक ट्रस्ट है, मुझे नाम इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उनका एक कोलैबोरेटिव कोई प्रोग्राम भी है, उसके अंडर भी वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हेड चाहिए होता है। वो एचईसी की वेबसाइट से जाके आप उसको देख सकते हैं और मजीद उसके बारे में आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कुछ स्कॉलरशिप्स उसमें ऐसी हैं जिसमें आप जो क्रेडेंशियल अपनी एप्लीकेशन में दे रहे होते हैं उनकी बेस पे ही आप एलिजिबल होते हैं, और आपको कोई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता। जैसे केपी के और कैंपस फेलोशिप है, उसमें आपने जस्ट टिक करना होता है वो बॉक्स, और आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं अगर आप एडमिशन ले जाते हैं वहाँ पे कैम्ब्रिज में। थैंक यू सो मच जाबिर साहब। आई वांट टू ऐड समथिंग। ये आपने जो स्कॉलरशिप्स की बात की, ये बिल्कुल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग वो है उसमें तकरीबन 8 से 12 स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, यू कैन अप्लाई। उसमें एक है रोवान विलियम स्टूडेंटशिप जो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट जोन रीजन्स हैं। ये सारे प्रोसेस पे मैं गया हूँ, ये सारे एप्लीकेशंस आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल दिस एप्लीकेशंस। तो मैं सिर्फ इसलिए मतलब कि इस हवाले से
ये जो आप बता रहे हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी है एक, ये सारे स्कॉलरशिप, इसके लिए आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कंसीडर होगा। तो मतलब ये है कि ये इस चीज़ को मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहता था। थैंक यू गुड। और आपका कोई और क्वेश्चन? नहीं, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, thank you so much. I think we have a couple more hands raised. We've been waiting very patiently. Osama, would you like to ask your question? First of all, thank you for the panelists for this workshop and talk. I was worried about one thing, as my bachelor's is in mechatronics engineering, and I want to pursue similar in field of robotics or similar research areas. So I was noticing in previous workshops so far, I have seen that panelists are mostly, if not all, are not from the engineering and not are in the engineering domains. So I was worried if there are equal or maybe enough opportunities for engineering domains as well for the students to apply for master's program. Thanks for that question. I don't know if anyone from the OPP So team also wants to come in on that, but I wouldn't take the representation of the panelists as a means of saying that there isn't opportunities in that space. But yeah, Talal, do you have any more? Yeah, thank you so much. Yeah. So Jaber is from a science background. I am a mechanical engineer as well. So and we have around 15 to 20 mentors who are from engineering background. Usually, a lot of Pakistanis do come into the engineering field, and they are in the in Oxford you have the computer science, then you have physics, chemistry, and then you have the engineering and material science sort of area. So we do have a lot of Pakistanis in that as well. So if you have a specific question regarding the application process, Jaber and I can help you with that. And obviously, you might have been connected with a mentor as well to sort of look at your application. So do you have a specific question in terms of that? इस बात की गारंटी है कि काफी ढेर सारे हैं engineers और science की side पे पाकिस्तानी students, so don't worry about that. यस और अगर आपकी क्वेश्चन आप सेटिस्फाई नहीं होते इधर और आप हमें लिस्ट दें अपने क्वेश्चंस की, और हम आपको एक ऐसे मेंटोर के साथ कनेक्ट कर देंगे कि जो आपके बिल्कुल ही डोमेन के साथ होगा. वी ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम हर बैकग्राउंड का एक मेंटोर या एक से ज़्यादा मेंटोर रखें. तो थैंक यू फॉर योर सजेशन. Okay, sir. Thank you so much. That was a relief to hear. Okay, so you can, yeah, please do reach out to us or the team if you do want to connect anyone more specifically or ask any specific questions regarding your field of study. Okay, moving on to Junaid. Would you like to ask your question? I see that you're off mute, लेकिन आवाज नहीं आ रही है अगर आप बात कर रहे हैं. Maybe you'd like to type it instead. Okay, we're going to move on. Junaid, we can't hear you. अगर आप question chat में type कर सकते हैं, then we'll try and come back to it. And Jaber, we can also see your screen, so maybe you can stop sharing now. Okay, great. A few other questions coming in through the chat, and Amna, thanks for replying to some of them. There's been a few questions about the OPP scholarship opportunities. I don't know if anyone from the team wants to talk about those.
There's a question about candidate and eligibility criteria. So yeah, I'm happy to take those questions. So just to give you an overview of the OPP scholarships, we have scholarship support for 1 year for masters and DPhil students, and most of the candidates our main scholarships. So so the Malala scholarship. So the OPP scholarships are divided into multiple scholarships, and every scholarships have a different requirement. तो एक हमारी साइंस के ऊपर है, इसी तरह एक हमारी साउथ पंजाब के ऊपर है, एक one of the scholarships is dedicated solely for women, and so on and so forth. So this is just to give you an overview of our scholarships. We usually this year we provided 10 scholarships, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उसको increase कर रहे हैं. The type of candidates, anyone who studied, who's from Pakistan, who studied in Pakistan and is applying for the first time to the UK would be preferred. But we have selected candidates who already have a bachelor's degree from a university outside Pakistan. और वो specifically इस तरह होता है कि अगर उस student ने स्कॉलरशिप पे एजुकेशन हासिल की है या उस स्टूडेंट को सिर्फ पार्शियल सपोर्ट चाहिए 10,000 15,000 पाउंड की, तो we'll be looking at that application as well. So last year we got 62 applications and we interviewed around 40 and we were able to support 10 to 11 students. But yeah, the aim is to provide as many students the opportunity to be able to benefit from an Oxford education. I think, Talha, do you want me to add to it as yes, please. Yes, yes. Has availed the scholarship? Huh? Yeah, please. I think like when we talk about the Oxford Pakistan program, to be honest, like going through the process, by the way, it's an extensive process. It's not very easy to get the Oxford Pakistan scholarship. It's a very competitive process. There are interviews, there are essays, etc. But one of the things that which I really appreciate about the Oxford Pakistan program is the fact that they try to ensure that they give the opportunity to somebody who has not had the opportunity and who has worked on grassroots levels in Pakistan. And if you look at the profiles of the people who have come on the Oxford Pakistan program, you'd see, there are people who otherwise would not have been able to come to Oxford, So I think that's one of the big pluses of Oxford Pakistan program. But then again, you need to also be like any other scholarship, like any other application process. Oxford Pakistan program also asks you certain questions, and some of them are exactly what they would ask you in your personal statement is what you have done, how. And I think one of the things that you need to really focus on when you talk about any scholarship application is how you're going to utilize this scholarship to gain a benefit from Oxford and do something better in the future. So the future prospects of what you're going to do after the scholarship is again an extremely important component of the application for scholarships. So make sure कि वो तो generally बहुत सारी scholarship में चाहे वो Wikinoon हो चाहे वो Oxford Pakistan program हो, वो exactly आपसे पूछते हैं कि आप future में क्या करेंगे. So be very clear on what you want to do in future and how the program at Oxford is going to help you get there. Great, thanks. Anything else to add from anyone on the panel? Okay, great. There's been a few questions and one has come up again. Thanks, Saddam, on these different elements of the CV that you have, and do you have to re-mention them again in the statement of purpose? So just on this topic, I think it relates to what we've been talking about. The CV is your summary of both your academic and your professional experience. I think there's been a workshop on CV writing. There's a few resources online, so definitely check those out in terms of how to get your CV compact and highlighting the right things. I think there's no thing of repeating something in your statement of purpose. Really, as Amna also mentioned to earlier, all of the elements of your application have to tie together and refer to one another. So if you're picking something specific from your CV to
elaborate on in your statement of purpose, you're bringing a different, you have probably more space to elaborate on it, what you did, what was your role in it, what did you achieve out of it, what were your learnings and reflections, what is it making you think of going forward. So all of those are opportunities to actually highlight and build off of elements within your CV that you have very little space to actually talk about. So do make sure that they are coherent, and don't see it as a repetition, but an opportunity to expand on that. So if you have publications you worked on, volunteering experience that you've all just listed in your CV, try and use that link to build it out in your statement of purpose. Anything else that anyone wants to add on this topic? Okay. I don't see there are any hands. A couple more questions on. Oh, sorry. Did you want to come in, Anna? Shanta, I just wanted to add something about the CVs for public policy programs. So again, like you might, one of the things that about misconceptions about CV is that we generally think that, oh, this thing is really stupid, I do not want it to show on my CV. So for example, if you have been head of a committee at your school, you have been a treasury for something, you have run for student rep elections, etc. And you might think that this is something very menial and I should not put it on my CV. It doesn't look professional enough, or it isn't very valuable in terms of how you're thinking about it. Please don't think that. Put whatever leadership position that you have availed in the past. Talk about all the volunteer work that you have done, be it in your schools, be it in your colleges. Talk about all the sports activities that you have done, by the way. So the CV is also another good way of showcasing you, not just as somebody who's passionate about one thing, but you as a person, right? So if there is diversity in your CV in terms of your you having played some sport, you having like volunteered for something, you just having run a business for yourself, I think just put all of that out there, just structure it well. And I'd also suggest that go through a few sample CVs. You'd find great sample CVs online. Just look up a few and make sure that you're following a pattern which is generally in vogue. So आपको बहुत सारे samples मिल जाएंगे. Just look at one and do that. But please do not shy away from putting in things that you have done, which sometimes might not align with the sort of work that you're doing. For example, I ran a cake business when I was in university, so I did put it up on my CV. So it just, जो बंदा आपको recruit कर रहा है या जो बंदा आपकी application को देख रहा है, वो आपको as a person देखना शुरू करेगा कि अच्छा इसके और interest भी हैं, because आपने जब आप Oxford आते हो तो आपने एक community का हिस्सा होना होता है, तो they also want to look for people who can add to that community, right? Not just be, very academic, but वो अपनी personality के through किस तरह से उसको होट को enrich करेंगे. So please do that. बिल्कुल आमना, आपने सही कहा. स्पेसिफिकली ओपीपी की स्कॉलरशिप में तो आपसे इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं एज अ पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, कि आपके सोशल एथिक्स, आपकी थॉट्स, आपकी कम्युनिटी इंटरेक्शन, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. Okay, great. Thank you. There were a couple of specific questions. Junaid, thanks for adding it to the chat because we weren't able to hear you earlier, on funding scholarships for PhD in CS. Does anyone know what that stands for and can elaborate on it? Okay, I don't believe we know what that is. Junaid, could you please type it out and we can see if we have any experience on it? Oh, you've already replied to that, Jabir. Thanks. Yes. Thank you. Ikra, you're asking about the certificates from school and work. Do you mean the certificates that you get when you complete a program? Do you want to come off of mute to elaborate on your question? Hello, Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. I'm just asking about the extracurricular certificates. Can we use them as well, as they are like way old in the time? So can we use them as well to showcase our talents or whatever we have been? Yes, definitely. Ali, do you want to come in here? You're nodding. I just wanted to say yes. I mean, use that, mention that in your CV. As Amna said, mention everything that you think it should be in your CV. I mean, don't mention those certificates into your personal statement. Personal statement should be very much about the course you're applying to. But do mention about those certificates or extracurricular activities in your CV, yes. All right, thank you so much. Thank you. Okay, I see there's other chat happening on specific questions and panelists are answering them. I think there was a question about other scholarships outside of the UK and other parts of Europe. If that's a question that relates to other people, Jabir, is there anything you want to say on that? Yes, ये क्वेश्चन था इटली के बारे में, तो वो एक्चुअली ये पूछना चाह रहे थे कि यूके के अल्टरनेटिव के तौर पे हम इटली देख सकते हैं. तो इट्स डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस. आप कोई भी यूरोपियन कंट्री देख सकते हैं. अगर आपको यूके में कहीं भी फंडिंग नहीं मिलती तो आप जर्मनी देख सकते हैं. जर्मनी के अलावा आप इटली देख सकते हैं. और देयर आर सो मैनी यूरोपियन कंट्रीज. आप नेदरलैंड देख सकते हैं, हॉलैंड देख सकते हैं, नॉर्वे देख सकते हैं, स्वीडन देख सकते हैं. तो ये तो डिपेंड करता है आपको कहाँ एडमिशन मिलता है, कहाँ फंडिंग मिलती है. तो कीप ट्राइंग. Okay, are there any other questions that anyone wants to ask by raising hands or coming off of mute? There are a couple of questions. Upar jaake, I think we haven't answered. Please, yeah, please help me identify. I'm struggling to track the chat. So there's one about, I don't know what it means, but please differentiate between statement of SOP, I think that's statement of purpose, study plan, and motivational letter. I don't know what a motivational letter is. So, अगर किसी को As I know, मोटिवेशनल लेटर में आपने अपनी मोटिवेशन को मेंशन करना होता है कि आप फर्स्टली आप इस कोर्स में क्यों आना चाह रहे हो, जो भी स्पेसिफिक आपका कोर्स है. और उसके बाद आपने फिर वो रिसर्च एरिया जिसमें आपने कंटिन्यू करना है फर्दर अपनी डिग्री को, आप उसमें क्यों आना चाह रहे हैं. ये कंटेंट आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. जबकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थोड़ी सी डिफरेंट होती है. उसमें 3-4 और चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पास्ट वर्क्स क्या हैं, आप कौन कौन सी टेक्निक्स आपको आती हैं, कौन कौन सी टेक्निक आप फ्यूचर में जाके यूज़ करोगे और कैसे यूज़ करोगे, कहाँ यूज़ करोगे. तो इस तरह की 3-4 चीज़ें होती हैं जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में होती हैं और मोटिवेशनल लेटर में नहीं होती. ये इन दोनों का फॉर्मेट आप कोई भी आप यूट्यूब से देख लें, कोई भी वीडियो. देयर आर सो मैनी वीडियोस आर अवेलेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोटिवेशनल लेटर, एसओपी एंड पर्सनल स्टेटमेंट. और आपको इजीली इनका डिफरेंस पता लग सकता है. इनका कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. बस ये होता है कि जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी में एक ज़्यादा होता है, किसी में दूसरा ज़्यादा होता है. तो आपने वो ऑन द बेस ऑफ कोर्स आपने उसको शफल करनी होती हैं चीज़ें. And then somebody has just asked, can we use Europass CV format for the UK also? I mean, Europass CV. Does anyone here know about that? Yes, ये प्रेफरेबल होता है कि आप यूरोप में कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यूरोपास CV चाहिए होती है. इन सम कोर्सेज तो वहाँ पे मेंशन होता है कि आपको स्पेशली इन इटली, जब आप इटली की बात कर रहे हैं तो इटली में तो ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मेंशन है कि बहुत से कोर्सेज में मेंशन है. मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा, इस तरह की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में. तो वहाँ पे मेंशन होता है कि आपकी CV यूरोपास में होनी चाहिए. पूरी गाइडलाइंस दी हुई होती हैं हर सब्जेक्ट के प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर. आप उसको डिटेल में अगर स्टडी करें तो
उसके अलावा यूके में ठीक है, आपकी यूरोपास सीवी बेटर है, अगर आपके पास यूरोपास की सीवी नहीं है तो फिर भी सीवी चल जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करेंगे वहाँ पे मेंशन होती हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको चाहिए तो उस प्रोग्राम की वेबसाइट पे वो बड़ी अच्छे से मेंशन होती है वो चीज़ कि आपको आपका सीवी इस तरह का होना चाहिए, आपके एसओपी कितने वर्ड्स होने चाहिए, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, आपके रिकमेंडेशन लेटर में ये कंटेंट होने चाहिए, इसके इतने पॉइंट्स हैं, इसके इतने पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। इवन एवेल्युएशन क्राइटेरिया मुकम्मल तौर पे आपको बताया जाता है कि आपसे हम क्या डिमांड कर रहे हैं, मींस कोर्स या यूनिवर्सिटी क्या डिमांड करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और हर चीज़ की आपको कैसे कैसे एवेल्युएशन के मार्क्स मिलेंगे और आपका मेरिट कैसा बनेगा। तो माय सजेशन इज़ दैट कि जिस भी प्रोग्राम में जहाँ भी आप लोगों ने अप्लाई करना है या ट्राई करना है या जिस भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, पहले उनकी वेबसाइट, प्रोग्राम की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, एवेल्युएशन क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स सबको थ्रोली आप पढ़ें। जब पढ़ लें तो उनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो देन हमें बताएं, वी आर हियर टू फैसिलिटेट यू। Okay, we are the hour. If there are any final questions, please raise your hand or put them in the chat. Otherwise, we'll try and wrap up soon. Give it another few seconds. If there are no other questions, we'll wrap up. Also flagging again that there's a session tomorrow at the same time, going into a bit more depth on personal statements. I know we talked a lot about it today. लेकिन अगर आपको कोई और questions हैं या specific inspiration आपने देखनी है, अगर how to structure your statement, what type of content, things like that, if you're working on one, come along to that session. And I believe that there are going to be other sessions as well in the next few weeks, so keep an eye out for that. Anything else to add before closing from the team? Yes, I want to mention one thing. ये स्कॉलरशिप लेना या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी हासिल करना, ये एक कमिटमेंट की गेम है और आपको पैशन चाहिए होता है और आप में वो चीज़ चाहिए होती है, वो जज्बा चाहिए आपसे, वो डिटर्मिनेशन चाहिए आपसे कि आप रिजेक्शन को फेस करें और रिजेक्शन को फेस करके अपने आप को मजबूत करें और अगेन एंड अगेन अप्लाई करें और अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में उनको हर एप्लीकेशन के बाद उनको एवेलुएट करें, उनको मिनिमाइज करें, उन पर वर्क करें और वेट करें और इंशाल्लाह एक वक्त आपके लिए ऐसा आएगा कि आप ही वो आदमी होंगे जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपका हौसला, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है to win a scholarship at any prestigious institute like Oxford, Cambridge, or any other. I think there's just one more question. Adil asked that question before. He's asking again. And Adil, जहाँ तक मुझे समझ आई है, I think motivation letters, जैसे जाबिर ने कहा, they are very much like research proposals. So I think it's a good idea to reach out to your potential supervisors with a shorter research proposal, like 200 words, 250 words, जैसे abstract होता है पहले, because they won't be able to read 1,000 words research proposal or 1,500 words, 2,000 words. So yeah, maybe if you want to do that, you can. कोई issue नहीं है उसमें. Yeah. और आदिल, प्रोफेसर्स जब आपको एलोकेट कर रहे होते हैं ना, जब मोटिवेशन लेटर मोस्टली तब चाहिए होता है जब आपने एप्लीकेशन देनी होती है यूनिवर्सिटी को और आपको एक्सेप्टेंस मिली होती है। तो जब भी यूनिवर्सिटी के पास जो भी प्रोफेसर आप मेंशन करते हैं अपनी एप्लीकेशन में कि मैं इस प्रोफेसर के अंडर जाना चाह रहा हूँ और इधर प्रोग्राम में मेंशन करना नहीं भी होता, तो जिस भी सुपरवाइजर के पास या प्रोफेसर के पास आपकी एप्लीकेशन जा रही होती है तो दे हैव एनफ टाइम टू रीड योर मोटिवेशनल लेटर, almost 1 page or 1.5 page, doesn't matter कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देना है या आपको फंडिंग देनी है तो आप
कि वो एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पे पढ़ते हैं और थारोली उसको देखा जाता है, उसके हर एक वर्ड को देखा जाता है, आपकी पूरी स्टोरी समझी जाती है और देन आपको एडमिशन या आपको फंडिंग मिलती है। इट इज़ नॉट ईजी कि ऐसे नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट 10 लाइनें लिखी हो या 5 लाइनें लिखी हो और प्रोफेसर के पास वो टाइम ही ना हो और वो देखे और लक बेस पे हो जाता हो, ऐसे नहीं होता। प्रोफेसर हैव एनफ टाइम और उनको वो टाइम पहले देखा जाता है हर प्रोफेसर का और वो एलोकेट करते हैं अपना स्केड्यूल एप्लीकेशंस के लिए और वो सर्टेन टाइम पे ही आपकी एप्लीकेशन रीड कर रहे होते हैं और थारोली रीड कर रहे होते हैं। बस इसमें एक चीज़ ये है कि ये इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए कि अगला बंदा पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाए। तो इट शुड बी आई थिंक सो 700 वर्ड्स और 600 वर्ड्स में आप अपनी स्टोरी बयान कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे तरीके से उसको कंसाइज करके चीज़ों को मेंशन करो तो। Thank you for that. Squeezing in the last question. Thank you everyone for joining. We'll also be sharing the recording and any other resources from this session and future sessions. So thank you. Let's see you all soon. Thank you for moderating, Shanze. Thank you so much. Thank you, everyone. Yeah, was there anything else to say at closing? Hello? No, that's it. Thank Okay. you so much. Okay. Thank you. Thanks Take care. everyone. Bye. Take care. Thank you.